Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, I welcome you all in the lecture number 10 of Computer Communication and Networks. Dear students, what we are going to study today. Today's lecture is about the conversions. Students, what are the conversions? You should have to know that why we need a conversion. Actually, information must be transformed into signals before it can be transported across the communication medium. How information is transformed, that depends on its original format and on the format used by the communication devices. If you want to send a letter by a smoke signal, you need to know which smoke patterns make which word in your message before building the fire. So words are the information and the puffs of smoke are representation of the information. Students, we have discussed that data that need to be transmitted, it can be an analog or it can be a digital. Similarly, the signals that we actually send, they can also be an analog or digital. There are also two different types of signals that needs to be sent. They can be digital transmission or they can be an analog transmission. Students, there are two types of digital transmission. One is digital data to digital signal conversion, and another one is analog data to digital conversion. Sometimes we need to convert digital data into digital signal, and sometimes we need to convert analog data into digital signals. Similarly, sometimes we need to convert digital data into analog signals and analog data into digital signal. So what is meant by analog or digital conversions? Analog data must be a function of time and occupy a limited frequency spectrum. Such as data can be represented by an electromagnetic signals which is occupying the same spectrum. So digital data can be represented by digital signals with a different voltage level for each of the two binary digits. But these are not the only possibilities. What can be different possibilities are? There can be different possibilities. The data which is stored in the computer system, that is already always in the form of zeros and ones. To be carried from one place to the other, data is usually converted into the digital signals. This is actually called the digital to digital conversion and also called encoding digital data into digital signals. Students, sometimes we need to convert an analog signal to the digital signal. For example, conversion of telephone conversation to digital signal for a number of different reasons, such as to decrease the effect of noise. This is called an analog to digital conversions. We may also call it digitizing and analog signals. Sometimes we might want to send a digital signal coming out of a computer through a medium designed for analog signal. For example, to send data from one place to other using a telephone line. This is called a digital to analog conversion. What is meant by digital data to analog signal conversion? And this is also called a modulating a digitized signal. So for this purpose, digital data can also be represented by analog signal by use of modem. And what is the function of modem? To modulate the signal or to demodulate the signal. Often an analog signal is sent over long distance using analog media. So for example, voice or music from a radio station which is in an analog signal is suitable for this link of transmission. So sometimes we need the conversion of analog data to analog signal as well. Similarly, analog data can be represented by digital signal. So the device that performs this function for voice data, that is called codec, and that is for the coder and decoder. So let's conclude this slide. What we have studied over here, that we should have to know that what is an analog or digital conversions. Analog data or digital data sometimes needs to be converted into an analog signal or digital signal. Sometimes analog data should have to convert into digital signal,
and sometimes digital data should have to convert into analog signal. It is the requirement of that time when we are transmitting data from one person or sender to the receiver. Students, analog data are a function of time and occupy a limited frequency spectrum. Such as data can be represented by an electromagnetic signals occupying the same spectrum. But the digital data can be represented by the digital signals with a different voltage level for each of the two binary digits. As all of you know that this is an analog data, and the digital data is in the form of like this. There are two levels. One level is this one and one is this one. But these are not the only possibilities. Digital data can also be represented by an analog signal. That is possible using the modem, and analog data can also be represented by the digital signal, and which is possible through the codec. Students, data stored in the computer is in the form of zeros or ones. To be carried from one place to another, data is usually converted to digital signals. So this is called digital data to digital signal conversion, and digital data to digital data to digital signal conversion is also called encoding digital data into digital signals. Again, sometimes we need to convert analog data to the digital signal. For example, conversion of telephone conversation to digital signals for different reasons, like to a decrease effect noise. This is called analog to digital conversion. This is also called digitizing an analog signal. We might want to send a digital signal coming out from computer through a medium designed for analog signal. For example, send data from one place to another using a telephone line. That is called a digital to analog conversion. That is also called modulating a signal. Often an analog signal is sent over long distance using analog media. For example, voice or music from a radio station, which is an analog signal, is transmitted through the air. However, the frequency of voice or music is not suitable for this kind of transmission. So the signal should be carried by a higher frequency signal. This is called analog to analog conversion or modulating an analog signal. Students, these are some examples of different kind of conversions. In the first one, analog data that is voice or sound is converted into analog signal, and the medium is a telephone. Next one is the digital data that the binary voltage pulses, and they are converted into analog signals. They are modulated on the carrier frequency, and that is possible through a modem. Next one is analog data that have to be converted into a digital signal, and it is possible by using the codec. The last one is digital data. Digital data should be converted into digital signal, and this is possible through the digital transmitter. Students, now we are moving forward that one step ahead. We want to start from the digital data is in which we have to convert the digital data to the digital conversion. They are representation of digital data by using the digital signals. So techniques for digital to digital conversions are the line coding, block coding, and scrambling. Line coding is always needed, block coding may not be needed, and the scrambling may not be needed. But the line coding is always needed. Students, what is meant by the line coding? As we are studying that what is the conversion of digital data to digital signals, the first thing that is always needed is a line coding. Line coding is the process of converting digital data to the digital signals. So what are the assumptions of this line coding? That data is stored in computer memory as a sequence of bits. As we all know that computer can understand the only one language,
which is a binary language, which is in the form of zeros and ones. Students, line coding converts the sequence of bit to the digital signals. Like these are the sequence of bits 0, 1, 0, and the conversion of digital signal is this. This is for 0, this is for 1, and this is again for the 0. For example, when we transmit data from computer to the printer, both original and transmitted data have to be digital. क्या करना चाहिए कि जब हमें ट्रांसमिट करना है डाटा को फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर, तो जो ओरिजिनल सिग्नल्स जिससे ट्रांसमिट होना है दे हैव टू बी digital. Data can be digital or signal can be digital. So encoding a digital signal is where ones and zeros generated by the computer are translated into the voltage pulses that can be propagated over the wire. Students, what is happening over here actually in this slide? You can see that there are two computers. One is of the sender computer and another one is of the receiver computers. And what is happening over us at a sender side and what is happening at a receiver side? Students, you can see that there is an encoder in the sender side and there is a decoder over a receiver side. And as I have already told that data stored in the computer is in the form of zeros and ones, and to be carried from one place to another place, data is usually converted into the digital signal. So these are the digital signal, these are the digital data. So this is called actually digital to digital conversion, and this is also called an encoding digital data into digital signal. So sender will receive the data in the form of zeros and sender will send the data in the form of zeros and ones, and receiver will receive the data in the form of zeros and ones. But what is actually happening over a transmission medium, over a link? It is converted into the digital signal, and they are the digital signal. There are two levels of this of digital signal. One is for the 0 and another one is for the 1. And how the digital data convert into the digital signal? It is due to encoder. Encoder will convert the digital data into digital signal, and at the end of receiver there is decoder that convert the digital signal into digital data. Students, before knowing or practicing about the line coding schemes, we should have to know about the characteristics of line coding. And this is our main topic today, that we should have to know about the line coding schemes. There is a signal element or data element. You should have to know that what is a data element or signal element. Students, data element is the smallest entity, that is a bit, that can represent a piece of information, like 0 or 1 जो है वो हमारा data element है. डाटा कम्युनिकेशन में जो हमारा गोल है वो यही होता है कि हमने किस तरह से डाटा एलिमेंट्स को ट्रांसमिट करना है. सो आवर गोल इज टू सेंड डाटा एलिमेंट्स व्हिच आर व्हाट वी नीड टू सेंड. सो डाटा एलिमेंट्स आर बीइंग कैरिड एक्चुअली. सो what is a signal and where it will carry, वो जाएंगे कहाँ से? In the previous slide जैसे हमने देखा था कि zeros और ones over a link जब जा रहे थे तो वो signals के साथ जब जा रहे थे तो they are converted into the signal. वो उस convert हुए digital data को हमने convert किया digital signal के अंदर. So just like this you should have to know that what is a signal element. Signal element actually जो आपके bits wise होता है, time के साथ होता है, वो कहलाता है सिग्नल एलिमेंट. यानी कि शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिग्नल जो है दैट इज इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल एलिमेंट्स कैरीज डाटा एलिमेंट्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कैरियर है जो आपके डाटा को कैरी कर रहा है वो सिग्नल एलिमेंट है, और जो क्या चीज़ वो कैरी कर रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा? Data element. So signal elements are what we can send. So ratio of data element to signal element जो है वो different vary करती है. Like इसको हम data element और signal element को हम bit और baud से भी represent करते हैं. हम किस तरह से बिट और बॉड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अभी अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे भी कि कार इज अ कैरियर. यू कैन से दैट कार, जो हमारे पास कार है वो एक सिग्नल एलिमेंट है.
दैट इज कार को हम ये भी कह सकते हैं कि ये बॉड है, क्योंकि आपके पास जो रोड पर मीडियम जा रहा होता है दैट इज एक्चुअली वो आपका लिंक है जो आपको लेके जा रहा है। गाड़ी में अगर एक बंदा बैठा है जो कि ड्राइवर है तो आपका डाटा एलिमेंट भी वन होगा और सिग्नल एलिमेंट भी वन होगा, यानी कि आपका बिट रेट भी वन होगा और आपका बॉड रेट भी वन होगा। बट वन कार कैन कैरी मोर देन पीपल एज वेल, 3 4। तो यहाँ पे वी शुड हैव टू नो द रेशियो बिटवीन द डाटा एलिमेंट और सिग्नल एलिमेंट। सो किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं? इट इन अ वेरी सिंपल केस, देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बिट्स एंड सिग्नल एलिमेंट। अब ये देखें, इन द फर्स्ट वन डाटा एलिमेंट पर वन सिग्नल एलिमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बिट इंटरवल्स है, ठीक है। ये आपके पास जो है एक सिग्नल एलिमेंट भी है और हमारे पास एक डाटा एलिमेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो रेशो है दैट इज वन, कि एक वन डाटा एलिमेंट है और वन ही सिग्नल एलिमेंट है, यानी कि वन डाटा एलिमेंट है दैट इज वन, एक बिट इंटरवल किया गया, एक ही सिग्नल जा रहा है और एक ही जो है वो डाटा जा रहा है। बट इन द बी यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास सिग्नल जो है वो हाफ में जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है, ठीक है। देयर आर टू सिग्नल्स बट देयर इज वन डाटा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो रेशो है वो 1/2 है, कि वन डाटा एलिमेंट है बट इट इज टेकिंग टू सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास टू डाटा एलिमेंट्स हैं, सॉरी वन डाटा एलिमेंट है और टू सिग्नल है। अगेन हेयर यहाँ पे हाफ में जाके सिग्नल चेंज हो रहा है और डाटा एलिमेंट जो है वो वन है। सो रेशो कैन वेरी, यानी कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज जो सिग्नल और एलिमेंट और डाटा एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। नो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। Look at here, there are two data elements and one signal. It means what is ratio over here? Two data elements and one signal, that is 2. In this diagram you can see that four data elements, that is 1 1 0 1. We have four data elements but signal is 1 2 and 3. So 3 signal elements हैं और यहाँ पे 4 data elements हैं। So 4 data elements पर 3 signals transmit हो रहे हैं, तो ratio जो है what will be the ratio? That is 4/3. So the data rate versus signal rate क्या होगा? The data rate is a bit rate, is the number of data elements, is the number of bits sent in 1 second. But the unit of bit per second is BPS. The signal rate is a baud rate. As I have previously told that we can take an example of a baud as a car. हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है. We can say that this car is a baud. We can say this is a baud, right? So signal rate, also called a baud rate, this is also called a signal rate as we have previously discussed as well. So modulation rate, or we can say a pulse rate as well. So is the number of signal elements transmitted in 1 second. They are number of bits transmitted in 1 second and they are called the number of signal elements sent in 1 second. Like if one car, then baud rate is 1, and if 4 person are sitting in this car, then it means baud rate is 1 but the data rate is 4. Students, this is a very important goal of a data communication, to increase the data rate, increase the speed of transmission, decrease the signal rate. जितने ज़्यादा बिट्स भेजना, देखें जो ट्रैफिक सड़क पे जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी वो ट्रैफिक के ऊपर इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर एक गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोग होंगे तो वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब एक गाड़ी में लोग बैठ के हैं तो वो अलग अलग काउंट नहीं हो रहे, वो उस जिस मीडियम के अंदर जा रहे हैं उस मीडियम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सो अगर एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं तो दैट, या एक बंदा बैठा हुआ है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। असल में रोड के ऊपर जो गाड़ी जा रही है वो सिर्फ एक ही है। तो दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर दैट इंक्रीज द डाटा रेट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। आप जब डाटा रेट को इंक्रीज करते हो तो आपकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज होती है, और जब आप सिग्नल रेट को डिक्रीज करते हो तो आपकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स भी डिक्रीज होती हैं। What is the bandwidth? We have studied already in the previous class, although the actual bandwidth of digital signals is infinite. So the effective bandwidth is finite. So the baud
no, the baud, not the bit rate, determines the required bandwidth for a digital signal. जैसे कि आपको मैंने बताया है कि baud क्या होता है, that is a signal rate. तो signal rate determine करेगा कि हमें कितनी required bandwidth चाहिए होती है. क्यों? क्योंकि signal rate और baud rate जो होता है, that is a carrier. A carrier should have to know that how much bits have to take. Next one is the baseline monitoring. What is a baseline monitoring, students? In decoding a digital signal, receiver क्या करता है? It calculates a running average of the received signal power. This average is called a baseline. So, to determine the value of the data element की value को determine करने के लिए जो हमारे पास incoming signal आ रहा होता है उसकी power को हम evaluate करते हैं against this baseline. सो अगर हमारे पास एक बहुत लंबी स्ट्रिंग आ जाती है जीरोस और वंस की, दैट कैन कॉज अ ड्रिफ्ट इन द बेसलाइन. तो यहाँ पे फिर हमें कंफ्यूजन हो सकती है, बेसलाइन बाउंड्रिंग हो सकती है. इट मेक्स अस डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू डीकोड करेक्टली बिकॉज एक कॉन्टिन्यूसली हमारे पास 000 की एक लंबी जो है वो स्ट्रिंग आ रही है या वंस की एक स्ट्रिंग आ रही है. तो यहाँ पे बेसलाइन बाउंड्रिंग हो सकता है. हमें कैलकुलेट करना एवरेज रनिंग एवरेज ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल पावर क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. सो गुड लाइन कोडिंग स्कीम नीड्स टू प्रिवेंट बेसलाइन. उसमें बेसलाइन बाउंड्रिंग नहीं होना चाहिए, उसको बेसलाइन बाउंड्रिंग से बचना चाहिए. When the voltage level in a digital signal is a constant for a while, the spectrum creates a low frequency. That is result of Fourier analysis as well. So this is also a very much important topic, that is characteristics of line coding scheme with DC component. So the frequency around 0 is called DC. That is दैट इज द प्रेजेंट प्रॉब्लम एक्चुअली कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है दैट बिकम्स अ जीरो. सो ऐसे सिस्टम्स में जो लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर सकते, टेलीफोन लाइन कैन नॉट पास फ्रीक्वेंसी बिलो 200, तो देन आपके पास जो है वो डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम आती है. स्टूडेंट डीसी कंपोनेंट होता क्या है? वी शुड हैव टू नो कि हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि डीसी कंपोनेंट क्या है और सिंक्रोनाइजेशन क्या है. तो स्टूडेंट्स डीसी कंपोनेंट जो है वो एक हमारा एवरेज एम्पलीट्यूड होता है ऑफ यूनिपोलर एनकोडेड सिग्नल इज नॉन जीरो. सो दिस इज कॉल्ड अ डीसी कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट विद द जीरो फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन सिग्नल कंटेन्स अ डीसी कंपोनेंट्स तो क्या होता है, इट कैन नॉट ट्रेवल through a transmission medium. So because ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम जो डीसी कंपोनेंट को हैंडल नहीं कर सकते, तो उसमें फिर जो सिग्नल जिन सिग्नल्स में डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम होती है वो उनको हैंडल नहीं कर सकते, जो कि जैसे कि वो लो फ्रीक्वेंसी होते हैं या उनकी एक लिमिट दी जाती है तो वो अपनी लिमिट और रेंज से नीचे या एक्सीड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज द सिंक्रोनाइजेशन. अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि व्हेन द सिग्नल इज अनवेरिंग, रिसीवर कैन नॉट डिटरमिन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच बिट. सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? व्हेन डाटा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वंस एंड जीरोस. अगेन कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वंस और जीरोस आ जाते हैं तो उस केस में रिसीवर हैज़ टू रिलाई ऑन टाइमर. सो कंसिडर करें कि व्हेन जब हम क्या करते हैं कि जब हम एक शॉर्टर बिट ड्यूरेशन की जो सिचुएशन है, लाइक सेंडर सेंड 10110001 while the receiver receives 110110011. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सो एक्चुअली हमने व्हाट इज द सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन के करेक्टली इंटरप्रेट करना सिग्नल को रिसीव फ्रॉम द सेंडर. द रिसीवर बिट इंटरवल्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली टू द सेंडर बिट. अगर जो रिसीवर का डाटा रेट है और जो रिसीवर का जो है बिट रेट है और जो सेंडर का डाटा रेट है और जो सेंडर का बिट रेट है, दे बोथ शुड बी इक्वल. सो इफ द रिसीवर क्लॉक इज फास्टर और स्लोअर तो उस केस में क्या होगा कि जो बिट इंटरवल्स होते हैं वो मैच नहीं करेंगे और रिसीवर माइट मिस इंटरप्रेट. Self-synchronization, a digital signal includes timing information of the data between transmitted. So the same can be achieved by adding transitions in the signal that alert the receiver to start
middle or end of the pulses. These are the considerations that we should have to know before going to start the line coding schemes. ये हमारे पास कुछ characteristics है जिसे हमने mind में रखना है when we will solve that work. So these points can reset the clock in case of receiver clock is out of synchronization. So these are the considerations which we have to remember as well. स्टूडेंट्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है दोनों साइड्स पे सेंडर और रिसीवर की बिट इंटरवल्स में, तो व्हाट विल हैपन? लुक एट दिस, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द रिसीवर हैज अ शॉर्टर बिट ड्यूरेशन. यहाँ पे सेंडर क्या भेज रहा है? वन बिट इंटरवल, वन डाटा एलिमेंट और वन सिग्नल एलिमेंट. बट रिसीवर की क्लॉक जो है वो थोड़ी उसके बिट इंटरवल्स वो क्या करें, वो 1 1 देन 0 1 1 1 0 0 0. उसकी जो रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है 1 1 0. तो यू कैन सी दैट सेंडर और रिसीवर दोनों जो है वो डिफरेंट हैं जो रिसीव कर रहे हैं. In a digital transmission, the receiver clock is let's suppose, just you can see कि अगर वो 0.1% भी faster है ना than the sender clock, तो कितनी extra bits per second जो है वो receive होंगी at the end of receiver if the data rate is 1 kilobits per second and if the data rate is 1 megabits per second. स्टूडेंट्स, अगर 1 किलोबिट्स पर सेकेंड है तो रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा 1001 बिट्स पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1000. क्यों? Why it happened? Because हमने 1000 का 0.1% लेना है, दैट इज 1000 बिट्स जो है सेंडर ने भेजी हैं, 1 एक्स्ट्रा बिट रिसीव हुई है, दैट इज 1001 बिट्स received. So what is the difference? क्या हो रहा है? सेंडर और रिसीवर दोनों की क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है और रिसीवर जो है वो 1 एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड जो है वो रिसीव कर रहे हैं. सिमिलरली एट 1 मेगाबिट पर सेकेंड में क्या है कि 1000000 बिट्स पर सेकेंड है और इसमें अगेन 0.1% फास्टर है क्लॉक. तो इस केस में आपके पास 1000 एक्स्ट्रा बिट्स रिसीव होंगी. वो किस तरह से कि हमने 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड को कन्वर्ट किया इनटू बिट्स पर सेकेंड में, इसका हमने 0.1% लिया, दैट इज 1000, राइट? सो वी विल ऐड दिस इन दिस वन. सो 1001 बिट्स रिसीव हुई हैं, सेंडर ने कितनी भेजी है? 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड भेजी है, रिसीवर को रिसीव हुई है 1000 एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड. Students, this is we can say that this is not a synchronization. यहाँ पे synchronization नहीं हुई है. The next characteristic is the built-in error detection. Desirable to have a built-in error detecting capability in the generated code to detect some of or all errors that occurred during transmissions. हम बहुत डिटेल के साथ error detection and correction methods पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि sometimes जो है वो कुछ built-in error detect capability होनी चाहिए जो आपके कोड को generate करें और detect करें some or all the errors that occurred during the transmission. So they are called the built-in error detection. इम्यूनिटी टू नॉइज भी होनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस हो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए. योर कोड शुड हैव टू बी डिजायरेबल दैट इज इम्यून टू नॉइज एंड अदर इंटरफेरेंसेस. कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स स्कीम इज मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट देन अ सिंपल वन. फॉर एग्जांपल वी कैन से अ स्कीम दैट यूजेस 4 सिग्नल लेवल्स इज मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट देन वन दैट यूजेस ओनली 2 लेवल. जितने सिग्नल ऑफ लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है. Students, in our next lecture, we will draw the spectrums, we will draw the graphs for these line coding schemes. So before knowing how can we draw the line coding scheme, you should have to learn all the memorize today's lecture, that is about the characteristics of line coding schemes. Students, now they are a different kind of line coding scheme. Number one is unipolar, polar, bipolar, multi-levels, and multi-transitions. They have further types. Unipolar has a non-return zero, polar has a non-return zero, return zero, and biphase, Manchester, differential Manchesters, bipolar में AMI और pseudo ternary पढ़ेंगे, and so on. Students, you should have to clear your concepts, otherwise you are not able to
perform these kind of tasks. You are not able to understand that what is the conversion of digital data into the digital signal. So next lecture से पहले अपने पास कॉपी और पेंसिल रखेगा. जैसे ही हम ये लाइन कोडिंग स्कीम्स ड्रॉ करेंगे, आप साथ के साथ वो ड्रॉ करेंगे. So that will be an easy for you to understand the lecture. So now this is the end of today's lecture. In the next lecture, we will start from the line coding schemes. Thank you very much. Allah Hafiz.